Hello everyone. The title of the slide is type of support and an overview structure of support system. It is presented by Pooja's group. So the introduction is structure needed to support, stay stable and carry loads. Support types affect structure, behavior and design, common in civil and mechanical engineering. स्ट्रक्चर्स वेरियस टाइप का सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है जो अलग अलग टाइप के लोड्स कैरी करते हैं और सबका फंक्शन और डिज़ाइन अलग अलग होता है एंड द फंक्शन एंड द डिज़ाइन और द डिफरेंट mechanism of the structure will look after it. Next point is why support types matter. The support types matter to determine the load carrying capacity, influence and deformation and stability, or it define boundaries and condition for analysis. The support types क्यों मैटर करते हैं? Because the load carrying capacity of the support and the stability of support. मतलब हर एक सपोर्ट का लोड कैरिंग कैपेसिटी अलग होता है एंड द स्टेबिलिटी इज डिफरेंट. Okay, so there are various types of support. First we'll look after the fixed support. So the next support is pin or hinge support. To restrain and translation in two direction, allow rotation. For example, door, hinge and common in truss and bridges. Okay, so the pin or hinge support we can say it have a two direction. Like first हम जो से कहा हम उसको एक ही डायरेक्शन में फिक्स सपोर्ट को हम एक ही डायरेक्शन में ये कर सकते हैं एंड दिस इज पिन सपोर्ट जहाँ पे हम इसको दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा जो डोर होता है हम वो 90 डिग्रीज के एंगल में मूव कर सकते हैं. सो दैट इज़ द पिन सपोर्ट. द नेक्स्ट सपोर्ट इज रोलर सपोर्ट. Is restrain the movement in perpendicular to the surface, allow horizontal movement and rotation. For example, bridge and expansion joints for ideal thermal expansion. So roller support is it only moves in one direction and it does not allow the rotation. वो rotation allow नहीं करता है, एक ही direction में move करता है और वो bridge expansions में use होता है. To say is simple support. It supports vertical load only, allow rotation and horizontal movement. The simple support means चीज़ है जिसके ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टली एक बीम या फिर कुछ चीज़ें रखी है जो रोटेशन अलाउ करती है एंड जो सिर्फ वर्टिकुलरली वो लोड कैरी कर सकते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टल चीज़ उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं एंड इट अलाउ अ मूवमेंट और अ रोटेशन. फॉर एग्जांपल बीम रेस्टिंग ऑन अ वॉल. जो हमारी वॉल की कॉलम की बीम होती है वो 90 डिग्री के एंगल में ऊपर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है. इट इज़ सिंपल सपोर्ट वेयर वर्टिकुलर बीम can support a horizontal beam, but it can we can't movement that particular beam of a column, but हमें उसे अलग अलग डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं.